So yesterday we have been discussing about the problem based on dependent sources, how we can deal with the dependent sources, how we can apply network theorems or any other property to solve for the current and voltage in any branch by using network theorems. Okay, if there is any dependent source is there in the circuit, so how we can solve. So we have taken this example and we have calculated the Thevenin voltage for across these two terminals A and B. Okay, so Thevenin voltage just we have calculated by removing this independent sources. We have two independent sources, 240 volt and 30 volt. Both will be short circuited. Okay, and sorry, for Thevenin's equivalent circuit for VTH. This dependent source will remain as it is. Dependent source will be there in the circuit, and we will remove this element connected between these two terminals. So when we remove this element connected between these two terminals, there will be no current flowing through this branch AB. So it means I naught will be 0. So when I naught will be 0, you know that this current source is depending on the current I naught. So if I naught is 0, it will be open circuited. The value of this current source, dependent current source will be 0. So that's why it will be open circuited. So when it will be open circuited by using simple KVL, because there is disconnected network and there will be no any current flowing through the branch, any branch. So only voltages will be added. So if we apply KVL, you can get the value of VTH. And VTH will be due to 240 volt and 30 volt. Both will be added because minus plus, then plus minus, then minus plus. So minus plus will be added. This is plus minus. It means VTH will be equal to 240 plus 30, that is 270 volt. Okay. And 270 volt you are getting VTH. Now for RTH, I told you that for RTH we have two methods. We will take this one in the below. Okay. So for RTH, as per our Thevenin's theorem procedure to calculate RTH, we know that we have to make open circuit just like VTH. So we will remove the element connected between these two terminals and we will replace all independent sources by their internal resistance. We know that we have two voltage sources. Both will be short circuited because in ideal voltage source, the internal resistance will be 0. So that's why both will be short circuited. Here short circuit, here short circuit. And dependent source will remain as it is in the circuit. Okay. So to calculate RTH in the circuit, with dependent sources, two methods are there.
So we have two methods to calculate RTH in the circuit where dependent source is there. First method is assume a dummy voltage source between the terminals. Usually take 1 volt. So if you are taking 1 volt and assume current flowing through the voltage source, through the dummy voltage source as I, capital I. Then Thevenin resistance RTH, that will be R equivalent, that will be equal to 1 divided by I. That you have to calculate. So in the first procedure, you have to assume dummy voltage source in between these two terminals so that there will be one driving source in the circuit. Okay, so 1 volt if we have assumed, and the current flowing through this voltage source is I, capital I. So voltage upon current, that will give us the equivalent resistance. So that's why based on this assumption we can calculate the value of RTH. Clear? Second method is that as per the property of Thevenin's and Norton's theorem, we know that in second method, using Thevenin's and Norton's theorem together means we will calculate VTH, and using Thevenin's theorem we will calculate ISC using Norton's theorem or IN, and division of VTH and ISC or IN will give us RTH. So RTH will be equal to VTH divided by IN or VTH divided by ISC. That will give us RTH value. So there are two methods. Either we can assume a dummy voltage source and current flowing through that voltage source, and when we calculate voltage source divided by current value, that will give us RTH. Or in the second method, we know that using the property of dual nature of Thevenin's and Norton's theorem, we know that it is just voltage, source conversion only. So voltage source can be converted into current source, or current source can be converted into voltage source. So accordingly, you can calculate RTH, that will give you VTH upon ISC or IN. So VTH we will calculate by using Thevenin's theorem. ISC we will calculate by using Norton's theorem. Clear? So we will calculate RTH by using these two methods. Okay. So first I will take method 1.
So our circuit will be 40 ohm here, 20 ohm here, and 4 I naught. For I naught. Forty ohm, 20 ohm here, 4 I naught AB. And we will assume a dummy voltage source here. We can take any direction, plus, minus. If we are taking plus, minus, so the current will flow in this direction I naught. Suppose this current is I naught. This is 40, this is 20. Okay, 40, 20. And this voltage source value is 1 volt. And we have calculated current I naught. We have assumed current I naught. And the this dependent current source is 4 I naught. Okay. So what will be the current flowing through this branch? As per the previous calculations that we have done in the previous class, if we apply KCL at this node, total will be 5 I naught, 4 I naught and I naught, 5 I naught. And by applying KVL in the outer loop, we can calculate the value of I naught. So if we apply KVL in the outer loop, and if we start from here, so current is flowing in the upward direction. We know that in the elements, current will flow from higher potential to lower potential. Here also, current will flow from higher potential to lower potential. Okay. So if we apply KVL in the outer loop, 40 I naught plus 1, because this is a 1 volt source, plus 1 minus 20 into 5 I naught is equal to 0. So from here we can calculate 1 upon I naught, and 1 upon I naught will give you RTH value. So what is current? This is 100 I naught, this is 40 I naught. It means 60 I naught is equal to 1. So it means 1 upon I naught is equal to 60. And what is 1 upon I naught? That is 40 I naught होगा या minus 40 I naught? क्या चीज? 40 I naught होगा या minus 40 I naught? अगर KVL लगाते हैं तो यस यस, सॉरी, हाँ सर, वहाँ माइनस होना यहाँ से चलेंगे माइनस होगा, सॉरी. Minus 40 I naught plus 1 minus 20 into 5 I naught, that is equal to 0. So this will be 140 I naught. यहाँ पे भी होगा चेंज. अब ठीक है. 140 I naught is equal to 1 upon I naught is equal to 140 ohm. So 1 upon I naught is nothing but RTH. RTH is equal to 1 upon I naught, and that will be 140 ohm. So we have calculated RTH, and VTH is 270 volt. So what is Thevenin equivalent circuit? Thevenin equivalent circuit will be VTH, RTH, and then in between these two terminals AB, we will again connect our element, that is 10 ohm we have previously removed. This is 140 RTH,
plus minus VTH is 270 volt. So what will be the current flowing through this branch? I will be equal to 270 divided by 140 plus 10. That is equal to 270 divided by 150, and that will give you exactly 9/5 ampere. So you are getting same current, that is 1.5 ampere. Just it is verified using this Thevenin's theorem also. Okay. So we have seen first method to calculate RTH. Now we will see second method. For RTH. So in this method, we will apply Norton's theorem and we will calculate ISC or IN. So in the same circuit that we have taken with independent sources, we have to take this circuit, okay, with this one. By removing this 10 ohm, we will replace by short circuit. We will just connect a simple wire between AB terminals, and rest elements will remain as it is. Okay, so this circuit, copy and paste here. So what we will do, we will remove this element connected between these two terminals. We will make short circuit here in between AB terminals, and we will assume current IN, that is Norton current. Okay, and that we have to calculate IN we have to calculate. So if the current flowing through this branch is IN, this will also be I0 will become IN. Okay, so I0 will become IN. So it will become 4IN. Is it clear to all of you here how this current will change? Because it is dependent current source. It is depending on the current I0. Means I0 is nothing but the current flowing through this branch AB. Now the current flowing through this branch is IN, that is Norton current. So this will replace by IN. So 4IN will be current source value. Is it clear to all of you? Is it clear to all of you? What is the problem? Is there any problem? Can you hear me? कोई आंसर ही नहीं कर रहा है या क्लियर तो बोलना चाहिए ना क्लियर है तो बोलने में क्या प्रॉब्लम है ओके सो this is 4I0 and that will be converted will be replaced by IN. So 4IN and IN as per the similar practice, if we apply KCL at this node, IN and 4IN will be added and all together it will give here 5IN. Now if we apply KVL in the outer loop, if we apply KVL in the outer loop, so we can get the value of IN simply 240
this will be plus minus, here it will be plus minus. So 240 plus 240 minus plus we have started from here. So minus plus, then plus minus, that is 40 IN, then minus 20 into 5 IN plus 30 is equal to 0. Okay, so it will be 140 IN is equal to 270. So IN is equal to 27 divided by 14. This will be ampere. IN is equal to 27 divided by 14 ampere. So what will be the value of RTH? RTH will be equal to VTH upon IN. VTH is equal to 270. IN is equal to 27 divided by 14. That will give you 140 ohm. Right? So in this, by using this method also, we are getting same Thevenin resistance value, that is 140 ohm only. Is it clear to all of you? This second method? Yes, sir. Okay, so if we have dependent sources in the circuit, we can deal these problems also as it is, just by using the principle of superposition, Thevenin's, Norton's, okay, any network theorems, whatever it is given, we can apply any network theorem, and we know that dependent sources will remain as it is in the circuit, and we have to only replace independent sources. Okay, so we have seen to calculate RTH in the circuit. Okay, I have taken another example for your understanding, for your better understanding. Okay, this is another example of dependent sources, where dependent current source is there, Ix into 1.5. It means 1.5 Ix. Ix is here, current flowing through the branch 6 ohm. Okay, so we have to find the Thevenin equivalent circuit across terminal AB. Thevenin equivalent circuit across terminal AB. Okay, before that, so far we have covered, means almost we are ending to this unit, first unit. So I will take a quiz in the next week. Okay, so on 10th September, next Tuesday, coming Tuesday, there will be quiz for you, and quiz will be on Google Classroom only. Okay, you have to go to your quiz in the Google Classroom and you have to answer. That will be multiple choice question type. Okay, just you have to take one answer, correct answer, and then you have to finally, after completing all the questions, you have to finally submit. Okay, and as per your correct answers, you will get result just after submission of your the answer sheet. Okay, so सर मिड सेम में कितने चैप्टर आएंगे? मिड सेम में जितना पढ़ा दिया गया रहेगा मिड सेम से पहले तक उतना आएगा. इट मीन सेकेंड यूनिट का भी कुछ पार्ट रहेगा. इस फर्स्ट यूनिट में आपका जो सिलेबस है उसमें एसी पार्ट नहीं है रिवाइज सिलेबस में. ठीक है,
So up to network theorem only you have to study. So from the next class, I will teach you next unit, that is semiconductor devices. So we will start with diode, BJT. तो आप लोगों ने डायोड बीजेटी थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ है ना 11th-12th में? यस सर। डायोड और पीएन जंक्शन पड़ा हुआ है सर, बीजेटी क्या होता है? बीजेटी वही है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एनपीएन एनपीएनपी टाइप पढ़ा होगा कुछ? हाँ कुछ पढ़ा। थोड़ा तो आइडिया होगा ना। दो टाइप ये का। सर चीना डायोड भी पढ़ा था सर। जीना डायोड भी पढ़ा है, ओके वेरी गुड। अगर जीना डायोड भी पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जीना डायोड भी हमारे कोर्स में है। ठीक है, जीना डायोड रिवर्स बायस में वर्क करता है और इसका एप्लीकेशन है एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अगर आइडिया होगा तो समझना इजी रहेगा। सो फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू this diode means semiconductor device portion. Before that, there will be means on the 10th September, as I told, there will be quiz. I will mail you also timing. I think when you are free on 10th September means Tuesday. Is there any free class on Tuesday? ट्यूसडे को कोई फ्री क्लास है? ओके, हम देख लेंगे टाइम ये सर टेबल। 9 AM पे है सर, ईवी की क्लास होती है वो। टाइम टेबल में हम देख लेंगे। एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ज्वाइन करके तब आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है? तो देख लेंगे, नहीं होगा तो आफ्टर 4 PM और 5 PM अगर कोई लेक्चर खाली 4 PM सही रहेगा सर, इंग्लिश की क्लास नहीं होती। 4 PM, ओके 4 PM पे भी ठीक है, देखते हैं। उस टाइम पे ये लिंक खाली होना चाहिए। ये लिंक अगर बिजी है तो इसमें नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम देख सर लेंगे। इंग्लिश क्लास का लिंक नहीं आता है सर, होती ही नहीं इंग्लिश क्लास ओके उस टाइम। ठीक है, मैं एक बार देखता हूँ आप लोगों का टाइम। फर्स्ट ईयर का टाइम टेबल यही है सर। फर्स्ट ईयर मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे में आपका खाली है 4 to 5। ठीक है, 4 to 5 में हो सकता है। मैं बता दूंगा एग्जैक्ट टाइम, आपको बता दूंगा। ट्यूसडे को होने वाला है, मैं अभी मेल भी कर दूंगा। ठीक है, सो फर्स्ट यूनिट अप टू आपका नेटवर्क थ्योरम आपको रेडी रहना है। तो जितना भी असाइनमेंट दिया गया है प्रैक्टिस कर लीजिए। कैलकुलेटर है आपके पास, सबके पास? मोबाइल वाला है सर। ठीक है, मोबाइल वाले से भी हो जाएगा। ठीक है, मोबाइल वाले से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्योंकि इसमें अभी तो साइंटिफिक कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, सिंपल कैलकुलेशन ही है। ठीक है, अभी इसमें हम कोई एंगल नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, साइन टैन कॉस की नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल कैलकुलेटर चलेगा। सो from the in this unit, as I told you that the AC part is removed from your syllabus in the updated syllabus, because the fundamental AC you have already studied in your 11th-12th. Okay, so I will give you for your revision, I will give you some documents related to that. So you can go through that document and you can revise or recap your AC fundamental understanding. Okay, so I will send some material
related to the AC part also, but we will not cover in this class AC part. Okay, this is just for your recap revision only. So from the next class, I will teach you semiconductor devices, about semiconductor devices, and the second unit will take around 10 lectures. It will all minimum 10 lectures it will take. So we will try to cover in 10 lectures only. Excuse me, sir. Sir, what will be the syllabus for the quiz? सिलेबस अभी बताया ना, जितना पढ़ाए उतना आएगा। Okay, sir, सेमीकंडक्टर तो नहीं आएगा ना? नहीं, सेमीकंडक्टर तो ओके सर। पढ़ाया नहीं तो कैसे आ जाएगा। आज तक जितना पढ़ाए उतना ही आएगा, ठीक है। ये तो लास्ट टॉपिक है। ओके सर। इतना तक ही आएगा। ओके, सो आप लोग भी ट्राई करो इसको। दिस प्रॉब्लम एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट अक्रॉस टर्मिनल्स ए बी। सो इट मीन्स हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब क्या है, क्या क्या फाइंड आउट करना है। VTH और RTH। Ultimately we have to find out VTH and RTH because it is a resistive circuit only. So we have to find out VTH and RTH in between AB terminal. This is RTH and this is VTH. So हमको VTH और RTH फाइंड आउट करना है थेवेनिन थ्योरम यूज करके। ओके, सो कैसे करेंगे इसको, आप लोग भी ट्राई करिए। फॉर VTH, सर्किट को वापस यहाँ पे ले लेते हैं। रीड्रॉ कर लेते हैं। प्लस माइनस, this is 10 ohm, this is a current source 6 ohm, 8, this is AB, 8 ohm, 6 ohm, current source 1.5 IX। कहाँ पे IX फ्लो कर रहा है, इस 6 ohm के क्रॉस, दिस इज IX। ओके, 10 ohm, 12 volt, this is ohm only। So we have to calculate VTH, means VAB, that will be VTH, राइट। कैसे करेंगे, पहले करंट डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर लीजिए। जैसे 12 वोल्ट से आपका 5/2 निकल जाएगा अगर केसीएल लगाते हैं ऊपर वाले नोड पे। तो उसके बाद जो सबसे बड़ा वाला सर्किट है उसको पकड़ लेंगे, तो वहां से जब आप केवीएल लगाइएगा तो आपका ये आईएक्स निकल जाएगा। तो आईएक्स आपका समथिंग आएगा 12/39। और उसके बाद 8 ओम के बाद अगर वोल्टेज निकालेंगे तो वो आपका अप्रोक्स 96/39 वोल्ट आ जाएगा, तो वो आपका वीटीएच होगा। नहीं, हम डायरेक्ट नहीं पूछ रहे हैं, हम जस्ट फर्स्ट स्टेप पूछ रहे हैं कि एटोम में कितना करंट जाएगा। 8 ओम में आईएक्स करंट ही जाएगा ना। यस, एटोम में IX ही जाएगा क्योंकि AB ओपन सर्किट है। सो ये दोनों रजिस्टर में सेम करंट जाएगा। यहाँ से जो IX आ रहा है वो इधर तो करंट जाएगा नहीं क्योंकि ये ओपन है। सो यही करंट यहाँ एटोम में आएगा। यहाँ पे 1.5 IX है। सो यहाँ पे कितना आएगा, उसके लिए हम यहाँ पे KCL लगा लेंगे। इसको मान लेते हैं हमारा नोड ये है 1। सो KCL एट नोड 1, यहाँ पे करंट हम एज्यूम कर लेते हैं I
this is incoming current, this is incoming current, I plus 1.5 Ix, that is equal to Ix. Okay, so it means I is nothing but I is nothing but I is equal to minus 0.5 Ix. ठीक है, it means ultimately this current direction will be in this current direction will reverse. Okay, so actual current direction will reverse. So इसका करंट इधर होगा, करंट इस साइड होगा. So if we reverse the direction, our current will be I is equal to 0.5 Ix now. With reversing the direction of current I. Okay, so अब यहाँ पे पोलैरिटी हम एज्यूम कर सकते हैं, मीन्स ले सकते हैं वोल्टेज पोलैरिटी प्लस माइनस हियर. यहाँ पे इस साइड करंट है तो प्लस माइनस, यहाँ पे भी प्लस माइनस. ओके, सो we can calculate the value of current Ix, okay, by applying KVL in outer loop. So इस outer loop में हम KVL अगर अप्लाई करेंगे KVL in outer loop, ओके, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 12 प्लस माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 12, देन माइनस प्लस इज प्लस प्लस 10I, then plus minus is minus minus 6Ix, then plus minus is minus minus 8Ix is equal to 0. क्लियर है? इक्वेशन सही लिखा हमने. 12 minus plus is plus plus 10I, then plus minus is minus minus 6Ix, then plus minus is minus minus 8Ix is equal to 0. By putting the value of I from here, that is 0.5 Ix, ये हो जाएगा 12 प्लस 10 इंटू 0.5 Ix माइनस 14 Ix इज इक्वल टू 0. अब फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं, दिस विल बी 5 Ix, सो 5 minus 14, it will give us 9 Ix is equal to 12. So Ix will give you 12 by 9. Okay, 4 by 3 ampere Ix. Ix is equal to 4 by 3. So what is VTH? VTH is nothing but voltage across these two terminals. Voltage across these two terminals will be equal to resistance multiplied by Ix. And the polarity will be same. And the VTH polarity will be same, plus here minus here. So VTH will be 8Ix. Simple. Clear है? So VTH will be 8Ix. 8Ix is equal to Ix, if we'll put, so 8 into 4 by 3, 32 by 3
वोल्ट। सही आ रहा है 32/3 वोल्ट VTH। यस सर सही है। सही है, राइट, थैंक यू। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट RTH। और RTH के लिए हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। हम सिंपल यहाँ पे AB के थ्रू हमको शॉर्ट सर्किट करना है। ओके, या तो शॉर्ट सर्किट करें या तो यहाँ पे हम कोई वोल्टेज एज्यूम करें और इंडिपेंडेंट सोर्स को हम ओपन या शॉर्ट करेंगे। ये वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे हम कोई वोल्टेज डमी वोल्टेज सोर्स एज्यूम करेंगे और उसके बाद फिर हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम इसमें नॉर्टन थ्योरम भी अप्लाई करें। AB के थ्रू हम शॉर्ट सर्किट क्रिएट करें और ISC हम कैलकुलेट कर लें। सो VTH अपॉन ISC विल गिव यू RTH। ओके, सो कौन सा मेथड ज़्यादा इजी रहेगा दोनों में से? डमी वोल्टेज वाला। डमी वोल्टेज सोर्स एज्यूम करेंगे तो देख लेते हैं कौन सा मेथड है, कौन सा मेथड से इजी रहेगा। पहले डमी वोल्टेज एज्यूम करते हैं। फॉर RTH सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा वोल्टेज सोर्स, ये वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट किया जाएगा RTH के लिए। ये शॉर्ट सर्किट होगा, डिपेंडेंट सोर्स एज इट इज रखेंगे, ये रजिस्टर तीनों एज इट इज रहेगा और यहाँ पे एक डमी सोर्स एज्यूम करेंगे। सो सर्किट रीड्रॉ करेंगे। यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ पे एक करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है, यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ पे एक रजिस्टर है और यहाँ पे हम एक डमी वोल्टेज सोर्स एज्यूम करेंगे। इसको मान लेते हैं ±1 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट है। इसमें करंट हम एज्यूम कर लेते हैं कैपिटल I। तो हमको अल्टीमेटली 1/I कैलकुलेट करना है। सो RTH इज इक्वल टू 1/I। ये हमें कैलकुलेट करना है अल्टीमेटली। करंट सोर्स का वैल्यू यहाँ पे देख लेंगे। वोल्ट रेजिस्टेंस है 10, 6, 8, 1.5 IX। ये है 10 ओम, 6 ओम, 8 ओम, 1.5 IX। IX is flowing in this branch, IX। IX यही है, ठीक है। ओके, सो ये सर्किट है, हमको अल्टीमेटली 1/I कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमने वोल्टेज सोर्स एज्यूम कर लिया, डमी वोल्टेज सोर्स। यहाँ पे करंट हमने एज्यूम कर लिया, करंट I फ्लो कर रहा है। सो हम मान लेते हैं नोड 1 है ये नोड 2 है। दोनों सोर्स नोड कन्वर्जन नहीं लगा सकते हैं। सोर्स कन्वर्जन में कैसे करेंगे? वोल्टेज सोर्स है यहाँ पे ना, वोल्टेज 1.5 IX और 10। 1.5 1.5 IX IX और 10 कर उसको। सकते, बिल्कुल कर तो सकते, वैसे कर सकते तो हैं। वैसे कीजिए, वहां से डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, मैं दूसरा मेथड से बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक वो है भी इजी है, वो भी इजी है। इसमें हम दोनों नोड पे अगर KCL अप्लाई करते हैं, सिंपल KVL KCL से सॉल्व हो जाएगा ये। KCL एट नोड 2, नोड 2 पे KCL अप्लाई करेंगे। दिस इज IX, दिस इज I। सो यहाँ पे करंट कितना जाएगा? अगर इसको हम एज्यूम करते हैं I1, इसको एज्यूम करते हैं I2। सो KCL एट नोड 2, I1 इजकल टू IX प्लस कैपिटल I, ठीक है। KCL एट नोड 1, KCL एट नोड 1, I2 प्लस
1.5 ix इज इक्वल टू ix। अगेन I2 का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा हमको। I2 का डायरेक्शन इस में ले लेते हैं इधर। सो ये हो जाएगा I2 प्लस ix। इसको हटा देते हैं, नेगेटिव आएगा, फालतू कंफ्यूजन होगा। दिस I2 आउटगोइंग करंट I2 प्लस ix इज इक्वल टू 1.5 ix। सो I2 इज इक्वल टू 0.5 ix, इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो हम अगर KVL अप्लाई करें इस लूप में, आउटर लूप में, by applying KVL in outer loop, ओके, बाय अप्लाइंग KVL इन आउटर लूप, यहाँ पे जो पोलैरिटी होगा, वोल्टेज पोलैरिटी, ये होगा यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। ठीक है, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस। सही है। एंड यहाँ पे करंट I1 इधर जा रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस प्लस। सो एक आउटर लूप में KVL अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, माइनस प्लस, दैट विल गिव यू प्लस, प्लस 10I2, प्लस माइनस इज माइनस, माइनस 6ix, देन -10 -1 इज इक्वल टू 0। दो ही रेजिस्टेंस हैं और एक वोल्टेज सोर्स है आउटर लूप में। I2 वी नो दैट 0.5 ix, सो दैट विल गिव यू 10 into 0.5 ix minus 6 ix इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो ये हो जाएगा 5 ix minus 6 ix इज इक्वल टू 1, माइनस ix is equal to 1, so it means ix is equal to -1 एम्पियर। ये ix का वैल्यू मिला हमको, ix is equal to -1 एम्पियर। सो अब हमको फाइंड आउट करना है अल्टीमेटली I1। ओके, सो I1 इज इक्वल टू समथिंग आएगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में ix, इफ ix इज -1, सो I1 इज इक्वल टू -1 प्लस I और I -1। सो एक और इस लूप में हम अप्लाई कर सकते हैं KVL, यहाँ वाले लूप में। ठीक, ये वाला लूप अगर हम फॉलो करते हैं, सो इस लूप में अगर हम KVL अप्लाई करें आउटर लूप के अलावा, इसको हम बोलेंगे लूप 1। ओके, सो KVL इन लूप 1, क्या होगा, दिस इज माइनस प्लस, दैट इज प्लस 10I2, सेम आएगा 10I2 माइनस 6ix, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद हम दूसरे ब्रांच में घूम जा रहे हैं, तो दिस इज प्लस माइनस, दैट इज माइनस -8I1, -8I1 इक्वल टू 0। 10I2 is nothing but, if we put the value of ix
it is 10 into 0.5 ix minus 6 ix minus 8 I1 is equal to 0. I1 is nothing but ix plus I. So यहाँ से अगर हम देखते हैं ये 5ix minus 6ix, that is minus ix minus 8 ix plus I. I1 is ix plus I. ix plus I, that is equal to 0. So further solve करेंगे ix plus 8ix plus 8I is equal to 0. अब 9ix 8I is equal to 9 minus 9ix. 8I is equal to minus 9ix. अब ix का वैल्यू हम पुट कर देंगे -1 एम्पियर. सो हमको केवल I के फॉर्म में मिलेगा. 8I is equal to minus 9 into minus 1. Ix is equal to -1, that is 9. So 8I is equal to 9. हमको क्या कैलकुलेट करना है RTH के लिए? RTH is equal to 1 upon I. So 1 upon I means 8 by 9. 8 by 9 ohm. ठीक है वैल्यू RTH is equal to 8 by 9 ohm. ठीक है ये? यस सर सही है. Yeah. You can verify by using the source conversion also. If you use source conversion, this current source in parallel this resistance can be converted into voltage source in series with the same resistance. Okay, so यहाँ पे ये convert हो जाएगा और शायद ये further ज़्यादा simple हो जाएगा. यहाँ पे 2 kVL अप्लाई करना पड़ा और इसको सोर्स कन्वर्जन से ज़्यादा सिंपल हो जाएगा मेथड आई थिंक. एक बार by using Norton theorem also, that is second method to calculate RTH, you can apply, and in that case also it will be very easy to calculate RTH as compared to this method. Okay, so you have to verify by taking different methods, and I will give today the assignment related to this dependent sources, network theorems based on dependent sources. I will give you assignment today, and then you have to complete before the deadline. Deadline I will give in the assignment only. Okay. Roll number Ashish Chandra. Present, sir. Abhya. Present, sir. Aditya. Present, sir. Akash. Present, sir. Akhilesh. Present, sir. Akshit. Present, sir. Anand. Present sir. Ankit. Present, sir. Apurva. Present, sir. Arnav. Present, sir. Avinash. Ayush. Gaurav. Ishant. Yes, sir. Krishna. Maitri. Present, sir. Mudra. Present, sir. Pranjay. Present, sir. Prachi. Present, sir. Prajwal. Present, sir. Priyansh. Yes sir. Priyanshu. Present, sir. Pulkit. Present, sir. Rahul. Rajiv. Rishi. Rohan. Shritik Sai. Present, sir. Rohan. Present, sir. Okay. Saket. Present, sir. Samyak.
Sangram, Present, sir. Sasank, Present, sir. Shubham, Present, sir. Shubham Singh, Srajan, Present, sir. Sudhanshu, Sujit, Sumit, Supriya, Present, sir. Suryans, Present, sir. Ujjwal, Utkarsh, Present, sir. Vaishnavi, Present, sir. Vedanshi, Vishal, Yash, Present, sir. Present, sir. Vinita, Present, sir. Sambhavi. Present, sir. Okay. Okay, then Shubham Singh present, sir. Shubham Singh. Shubham Singh, this one. Okay. Yes, sir. Okay, then you can join your next class. Okay, you can leave this meeting. I am leaving this meeting. Thank you.